All right, so we will be dealing with that. Now, जब हम human reproduction की बात करते हैं, तो we will be discussing about this topic. First, हम सबसे पहले इसके बारे में कुछ basics जानेंगे. That what is the localization and what is the exact configuration of the male reproductive system. If we talk about, then वो वाला एक part हो जाएगा, उसके बारे में हम deal करेंगे. And apart from that, we will be dealing with all those models, जो specific models होते हैं, हम उस all those specific models के साथ we will be dealing. That will include your male reproductive wala model, female reproductive system wala model, and all those things. All right, so let us start with that part. So the very first important thing to note in this part is that कि जब हम events of reproduction की बात करते हैं, all right, so you can see over here कि events of reproduction कुछ ऐसे process होते हैं कि जो कि sequence में होता है. Human reproduction is a very complex thing, and जब वो sexual reproduction की बात आ जाती है तो that becomes more and more complicated. तो वो और भी ज़्यादा complicated हो जाता है. So उस aspect में जब हम देखते हैं ना, तो that basically starts with the gametogenesis process. वो basically आपका gametogenesis से शुरू होता है, and starting from the gametogenesis process, it basically सबसे पहला आपका, if I just write down the sequence, मैं आपको यहाँ पे लिख देती हूँ. So events में सबसे पहले gametogenesis होता है, जो कि शुरुआत होती है जिसकी there will be the formation of male and female gametes. All right, तो पहली चीज तो ये important चीज है. Now after gametogenesis, which you can see over here, यहाँ पे भी mention किया हुआ है, that the reproductive events in humans include the formation of gametes, which is gametogenesis. तो gametogenesis में दो चीजें बनेंगी. That will be sperm formation in case of males, and there will be ovum formation or egg formation in case of females. तो ये दो चीजें बनती हैं. Apart from that, gametogenesis बनने के बाद there will be the transfer of gametes, and transfer of gametes के बाद there will be ultimately fertilization. तो sperms जो होंगे males में बनेंगे, and ovum जो होगा वो females में बनेगा. Now the transfer of sperms into the female reproductive or female genital tract, which is a process called as insemination. मतलब gametes बन तो गए, तो उसका transfer होना जरूरी है. तो जिस process से उसका transfer होता है, that is called insemination. This is called as insemination, जिसमें semen का release होता है in the female reproductive tract, in the female genital tract of the female reproductive system. Insemination के बाद ultimately once the sperms are released, then there will be the process of fusion of male and female gamete, which you can see over here. तो उसके बाद जो next process आ जाएगा वो fertilization का process आएगा, ठीक है, जिसमें कि fusion of male and female gamete. इसके बारे में हम लोग details में पढ़ेंगे. I'm just enlisting you the events कि किस तरीके से हम पढ़ेंगे. All right. So fertilization हो गया. Fertilization के बाद the next process will basically include the process of implantation. Implantation एक बहुत ही important structure का होता है, जिसको हम बोलते हैं blastocyst. Clear? Implantation, you can see over here, leading to the formation of zygote. This is followed by formation and development of blastocyst and attachment to its uterine wall, which is implantation. And फिर उसके बाद implantation जब हो जाएगा blastocyst का, तो फिर उसके बाद embryo का development होगा. And after the embryo development, there will be the process of parturition, जिसमें once the baby is fully developed, fully mature, तो उसकी ultimately delivery हो जाएगी. So this is called parturition. You can see embryonic development, and this embryonic developmental period, that is called gestation as well. इसको हम technically the term gestation has been given, and then the delivery of the baby takes place through the process of parturition. तो हम ये पूरा प्रोसेस जो है, जो मैंने ये जितनी प्रोसेस आपको एनलिस्ट की ना, ये सारा प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप we will be seeing in this part as well. Now let us just start with the very first important reproductive system, and that is called as the male reproductive system. Yeah. तो उसके लिए we can have a model of that part. Section देख लेते हैं. Now you can see the model of the male reproductive system which is being represented. तो ये basically skin के साथ है model, है ना? So this is, if I just maximize this part as well. So you can see that the presence of this male reproductive system is in the
lower abdominal area or lower pelvic region हम बोल सकते हैं. So this is lower abdominal or pelvic region, pelvic area you can say. Yeah, lower abdominal or pelvic region में basically ये होता है. So it is localized in the pelvic region. And इसमें बहुत सारे components का inclusion होता है जिसमें there will be the pair of testes along with accessory ducts, accessory glands and the external genitalia. So we will be seeing in the model now that exactly क्या-क्या different components हो जाते हैं जो कि इनको unique बनाता है. All right, so let us just have a look. Just a second. This one. Yeah, so this is the case. All right, so इसमें हमारा ये basically cross section है और you can say basically only the male reproductive system which you can see over here, पूरा representation and characterization है which you can see. And इसमें हमें ये देखना है that what are the different components. So it basically starts with a pair of testes. All right, so these are the testes which you can see, which are the main male reproductive sex organs in case of the male reproductive system, and along with accessory ducts and glands and वो सारे external genitalia हो जाएंगे जिसके बारे में हम study करेंगे. Clear? आगे बढ़ते हैं. Now you can see कि जो abdominal basically जो testis होता है ना, testis का localization outside the abdominal cavity होता है. ठीक है? So it is basically localized outside the abdominal cavity and that too in a pouch which is called scrotum. तो ये जो structure आपको दिख रहा है, this structure which you can see over here, this one. These are the testes. All right. So this is usually in pair, and that too it is localized in a pouch which is called as scrotum. So localization इनका ऐसा रहता है कि scrotum में containment जरूरी है because the scrotum actually helps in maintaining the low temperature of testis, which is usually 2 to 2.5 degrees Celsius lower than the normal internal body temperature. क्यों ऐसा जरूरी है? Because without this temperature, the necessary or the necessity of the spermatogenesis cannot be completed. क्योंकि ये temperature जो होता है वो very much important होता है for the process of spermatogenesis. तो जो scrotum का sac होता है ना वो it is beneath this testis like this. Beneath पूरा ऐसा इस तरीके के sac like structure में रहता है, which is ultimately called as scrotum. इस तरीके का ही रहता है. Yeah. So that's why it has to be contained outside the male body, which is called as a scrotum. Now, apart from that, जब हम एक बेटर कैरेक्टराइजेशन या बेटर फीचर की बात करेंगे तो उसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आ जाती है दैट एडल्ट्स में टेस्टिस जो होता है, दैट मींस दीज टेस्टिस, दीज आर यूजुअली टेस्टिस बेसिकली सिंगुलर टर्म को बोलेंगे एंड जब दो आ जाएंगे पेयर में हो जाएगा तो उसको हम टेस्टिस बोलते हैं. ठीक है, सो दैट इज द टेस्टिस. Now, adults में each testis is usually oval in shape with a length of around 4 to 5 centimeter and they have a width of around of about 2 to 3 centimeter. Again, if I just isolate this or just drag this part, you can see इनका जो width होता है, that means width is usually, this is the length, all right, and this is the width. So this is usually 2 to 3 centimeter wide and this is usually around 4 to 5 centimeter in length. ऐसा इसका characterization होता है. Now the testis is covered by a dense covering and each testis has about 250 compartments which is called testicular lobules. Now अब इसको दिखाने के लिए we can use the figure over here. You can see that each testis has around 250 compartments. हर testis में हमें 250 compartments दिखेगा जिसको हम testicular lobules बोलते हैं. ये जो testicular lobules होते हैं, हर testicular lobule के अंदर में it contains around 1 to 3 highly coiled seminiferous tubules. मतलब आप समझ जाइए कि if this is the testis, so it basically contains lobe-like structures. ये कुछ इस तरीके का, इसमें 250 compartments इस तरीके से arranged होते हैं and इसमें 1 to 3 highly coiled structures आपको मिलेगा which are ultimately called as
seminiferous tubules. तो ये जो आपको हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये जो सेक्शन है, यही चीज मैंने यहाँ पे बनाई हुई है, which you can see over here. So this is called basically seminiferous tubules. And seminiferous tubules, why seminiferous tubule is important? Because it is the site of sperm formation. यही वो साइट होता है जहाँ पे sperms बनेगा. So we will also be seeing the section of the seminiferous tubule in a bit. ठीक है, तो उसके हम बात करेंगे. तो ये चीज हो जाएगा. Just a moment. Alright, so this is the case. Now, अब इसमें हर lobule में, जैसे कि मैंने आपको बताया, that each lobule will be containing around 1 to 3 highly coiled seminiferous tubules in which the sperms are produced, and each seminiferous tubule is actually lined by 2 types of cells. हर seminiferous tubules में आपको 2 तरीके का cell दिखेगा. Alright, so basically 2 types of cells are being found. So if I tell you or show you the cross section of the seminiferous tubules, so you can see that part as well. Here, this is the cross section of the seminiferous tubule. So you can see 2 तरीके के आपको इसमें cells दिखेंगे. तो ये जो इधर के cells है, जो bigger cells है, these are called as the spermatogonia. ये section है seminiferous tubule का that I am showing you. This is spermatogonia. All right. Individually ये सारे के सारे spermatogonia ही हैं. Yeah, these are immature male germ cells जो कि diploid nature के होते हैं, having 46 number of chromosomes in them. और इसी से sperms बनने हैं. तो ये जो आपको दिख रहा है, ये अल्टीमेटली स्पर्म है, जो कि अल्टीमेटली कहाँ से बनता है, इस स्पर्मेटोगोनिया से बनता है. अपार्ट फ्रॉम दैट, सेल्स व्हिच आर प्रेजेंट ओवर हियर, ये जो सेल्स आपको दिख रहे हैं, these cells are called as the Sertoli cells, which are going to provide nourishment to the male germ cells. So आप यहाँ पे देख सकते हैं that their heads are embedded. ये हर स्पर्म के जो हेड है, ये सारे के सारे जो दिख रहे हैं ना आपको, ये सारे के सारे Sertoli cells. So 2 cells हमें दिखेगा section of seminiferous tubules में. One is the spermatogonia and the other is the Sertoli cells. ठीक है? So male germ cells undergoes meiotic division. Why meiotic division? क्योंकि इसमें जब meiosis होगा तभी ये sperms को produce करेगा, which is the reduction division. तो क्यों? क्योंकि sperms जो होते हैं वो usually haploid होते हैं और ये तो diploid है. तो इसमें जब reduction division होगा, then only ultimately sperms will be formed which are actually haploid. ठीक है? Leading to sperm formation. While the Sertoli cells provide nourishment to the male germ cells, the region outside the seminiferous tubules, which is called as the interstitial space. तो ये जो आपको space दिख रहा है, the space is called interstitial space that contains blood vessels and interstitial cells or the Leydig cells. इसका एक और section होगा, इसमें आपका सिर्फ cells दिख रहा है. Leydig और interstitial cell मैं आपको एक दूसरे section में दिखाऊंगी, जिसमें ये पूरा इनका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन मेंटेन होगा. और लेडिग और इंटरस्टिशियल सेल का काम ये होता है कि दैट दीस सेल्स दे आर बेसिकली रिस्पांसिबल फॉर सिंथेसाइजिंग एंड सिक्रीटिंग द टेस्टिकुलर हार्मोन्स व्हिच आर एक्चुअली कॉल्ड एज एंड्रोजन्स. तो ये टेस्टिकुलर हार्मोन्स को रिलीज कराते हैं, व्हिच इज एक्चुअली कॉल्ड एज एंड्रोजन्स. ठीक है? स्पेसिफिकली योर टेस्टोस्टेरोन जिसको हम बोलते हैं. Now other immunogenically competent cells are also present, जो कि immunity provide करने के काम आएंगे. इसमें मैं आपको यहाँ पे दिखा देती हूँ. You can see the diagrammatic section of the seminiferous tubules. यहाँ पे आप देख सकते हैं. This is the spermatogonia. ये अंदर, ये जो बाहर के cells आपको दिख रहे हैं, let me use a different color. These बाहर, ये जो बाहर वाला cell दिख रहा है, these are all spermatogonia. और ये जो अंदर के आपको cells दिख रहे हैं, ये वाले, these are all sperms, which is also called spermatozoa. और ये जो सेल्स नरिशमेंट वाला दिखता है, जिसमें स्पर्म के अराउंड में आपको दिख रहा है ये वाला पार्ट, दिस इज सर्टोली सेल, जो कि नरिशमेंट उनको प्रोवाइड करेगा, खाना प्रोवाइड करेगा. एंड दिस स्पेस इज बेसिकली कॉल्ड एज द इंटरस्टिशियल स्पेस और द इंटरस्टिशियल सेल्स. स्पेस को इंटरस्टिशियल स्पेस बोलेंगे और इसके अंदर में जो सेल्स होंगे उनको हम इंटरस्टिशियल सेल्स बोलेंगे, व्हिच यू कैन सी ओवर हियर. ऐसा जो कि अल्टीमेटली प्रोड्यूस करेगा टेस्टोस्टेरोन. Now let me show you the male accessory ducts. That means retrotestis, vasa efferentia, epididymis, and then vas deferens वाला part. ये भी इसके लिए फिर again we have to go back to the reproductive system of the male, which you can see. ठीक है? तो basically जो male reproductive जो system होता है,
मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के जो डक्ट्स हो जाएंगे, एक्सेसरी डक्ट्स होता है, दे आर 4 इन नंबर, रेटिटेस्टिस, वासा डिफरेंशिया, एपिडिडाइमिस एंड वास डिफरेंस होता है इस मॉडल में। नाउ व्हाट इज द इंपॉर्टेंट थिंग टू नोट इन दिस पार्ट इज दैट कि ये जो रेटिटेस्टिस एंड वासा डिफरेंशिया होता है, दे आर नॉट विजिबल। एक्सटर्नल आप जब सेक्शन देखोगे तो ये विजिबल नहीं होता, क्योंकि ये टेस्टिस के अंदर लोकलाइज होते हैं, ठीक है। द ओनली पार्ट विच इज विजिबल इज द एपिडिडाइमिस एंड द वास डिफरेंस वाला पार्ट। तो इसमें जब हम देखते हैं तो ये वाला जो पार्ट, इफ आई जस्ट आइसोलेट इट, ये वाला जो पार्ट आपको दिख रहा है, दिस इज एपिडिडाइमिस, क्लियर, और ये वाला जो पार्ट आपको दिख रहा है, दिस इज वास डिफरेंस, ठीक है। और इसके अंदर ये सीक्वेंस में होता है, मतलब ये टेस्टिस है, तो अगर इसके अंदर इस तरीके से टेस्टिकुलर लोब्यूल्स बना हुआ है ना, लाइक दिस, तो इसके अंदर से देयर इज रेटिटेस्टिस एंड वासा डिफरेंशिया दैट हैज इमर्ज्ड, ऐसा सीन होता है, ठीक है। नाउ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स ऑफ द टेस्टिस, ये पूरे सीक्वेंस में रहता है, मतलब कि रेटिटेस्टिस जो होगा दैट इज गोइंग टू ओपन इनटू वासा डिफरेंशिया, वासा डिफरेंशिया जो होगा दैट विल बी अल्टीमेटली ओपनिंग इनटू योर एपिडिडाइमिस, एपिडिडाइमिस जो होगा दैट विल बी अल्टीमेटली ओपनिंग इनटू वास डिफरेंस। सो दिस इज द सीक्वेंस एंड द कनेक्शंस थ्रू व्हिच जो भी स्पर्म सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में बन रहा है वो रेटिटेस्टिस में आया, रेटिटेस्टिस से वासा डिफरेंशिया, वासा डिफरेंशिया से एपिडिडाइमिस एंड देन अल्टीमेटली गोस टू योर वास डिफरेंस, ऐसा सीक्वेंस होता है। सो दिस सीक्वेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड दिस यू नीड टू रिमेंबर इट, एंड वो सारी चीजें इसमें दी हुई हैं, यू कैन जस्ट गो थ्रू, ठीक है। यहाँ पे epididymis leading into vas deferens, ascending to the abdomen and looping over the urinary bladder. It receives a duct from the seminal vesicle and opens into urethra as the ejaculatory. मतलब vas deferens जो होगा वो ultimately फिर ejaculatory duct में open करता है. This ultimately opens into ejaculatory duct and that too वो फिर urethra के through body के बाहर जो होता है वो sperm पूरा release हो जाता है outside the body through urethra. Now urethra originate करेगा urinary bladder से, clear, and extend करेगा through the penis to its external opening which is called urethrometer. अब जो जिसकी बात हो रही है urinary bladder की, this is the urinary bladder that is talking about. ये urinary bladder हो जाएगा क्योंकि vas deferens इस पे loop करता है, so you can see it is looping over the urinary bladder, ठीक है, that is the case. तो ये हो गया accessory ducts के बारे में. You can see in the figure also the different cross section इसमें longitudinal section में भी दिया हुआ है. longitudinal section में भी क्योंकि section काफी अंदर रहता है, इसमें आप देख सकते हैं, you can see over here, यहाँ पे sequence में दिया हुआ है. testicular lobule से seminiferous tubule निकला, then retitestis, vasa efferentia, अंदर क्योंकि अंदर के section होता है ना तो इसलिए दिखता नहीं है. फिर epididymis is the portion जो कि बाहर का portion होता है तो हमें दिखता है. Then there is epididymis, vas deferens. Vas deferens is looping over urinary bladder. You can see over here, ये loop कर रहा है इस तरीके से. And then ultimately this is going to open into this urethra. Urethra में ejaculatory duct, पहले ejaculatory duct में आएगा, and then through urethra वो फिर outside the body release हो जाता है. So ये हो जाएगा. यहाँ पर दिया भी हुआ है ejaculatory duct का. This one. ठीक है, ये हो जाएगा. Now moving over to the next part, you can see इसमें मैं आपको एक सीक्वेंस बता दूं तो ये हो जाएगा this one. पीछे से this case, all right, like now talking about the male accessory external male genitalia की अगर मैं बात करूं तो एक्सटर्नल मेल जेनिटेलिया में पेनिस का पार्ट हो जाएगा, दैट इज इंक्लूडेड इन द एक्सटर्नल मेल जेनिटेलिया एंड इट इज यूजुअली मेड ऑफ स्पेशलाइज्ड टिश्यू दैट हेल्प्स इन इरेक्शन ऑफ द पेनिस एंड टू फैसिलिटेट द इंसेमिनेशन प्रोसेस. एंड लास्ट एंड जो होता है पेनिस का दैट इज कॉल्ड ग्लैंड्स पेनिस एंड द लूज फोल्ड ऑफ स्किन दैट कवर्स द एंटायर पेनिस दैट इज कॉल्ड एज द फोरस्किन व्हिच इज आल्सो कॉल्ड प्रोट्रूड्स इन नेचर. ठीक है, तो इसमें अगर हम देखेंगे सो दिस फोरस्किन which is actually found, this portion which you can see, this is called glans penis, which is the enlarged end of the penis. All right. So if I can like just light out this part.
So this is the case. And again, if I just slice out this part, so you can see ये अंदर का ना ureter दिख रहा है पूरा section का, ठीक है? तो penis and glans penis, most of them they are ये क्योंकि interconnected tissues होते हैं ना, तो इसको isolate करके दिखाना is little difficult. So इसलिए that's why इनका association रहता है, ठीक है? तो ये part हो जाएगा. And this portion which you can see is talking about the this portion is called as the foreskin or prepuce. So this is called as the foreskin or prepuce. That covers the glans. Now, the male accessory glands. Now, we're showing you the male accessory glands. We need to go back to this part. And male accessory glands जो होते हैं, वो usually इसमें तीन होता है. Seminal vesicle, which is paired. Now, this which you can see is seminal vesicles. ये seminal vesicles हो जाएंगे. This is paired. One is here, one is here. Clear? Then there is a prostrate gland, which is unpaired. This one is prostrate gland, which is unpaired. एक ही होता है. And then there is a paired bulbourethral gland, जो कि अंदर की तरफ रहता है. So since again this is not visible. So secretions जो होते हैं सारे in gland state, they basically constitute the seminal plasma, which is rich in fructose, calcium, and certain enzymes. And the secretions of bulbourethral glands also helps in lubrication of the penis. मतलब altogether मैं बोलूँ तो ये जो glands होते हैं, these are primarily responsible for secreting semen, which is a combination of sperms, fructose, calcium, enzymes, prostaglandins, fibrinogen, and all those constituents, which is going to nourish the sperm and which is going to stabilize the motility of the sperm. ये काम होता है, ठीक है? So this is the case. So this is about the male reproductive system that we have seen. Now let us just take a look into the female reproductive system. So for showing you that part, we can again use the skin portion first. Okay. Now, when we talk about or when we say about the localization of the female reproductive system, so female reproductive system is completely inside the body of the female. ये चीज ध्यान में रखना है, ठीक है? So since this is completely inside the body of the female, so that's why this is very very important कि हमें ये जानना कि whatever the development that takes place inside, जो भी development है, embryonic development है, baby का development है, जो भी development होगी, जो भी internal processes होंगे, वो सब कुछ अंदर होगा body के, ठीक है? So that's why ये जो localization, this is the main localization, all right, which you can see. And apart from that, that is जो female reproductive system में जो pair of mammary glands होते हैं, that is also being included, but they are actually the accessory female glands जो कि involved होते हैं. So these are the mammary glands. इसके बारे में हम लोग और भी details में पढ़ेंगे in the coming time. Yeah, तो ये हो जाएगा. Now, female reproductive system का localization मैंने आपको बता दिया. So this is also localized in the lower abdominal cavity. तो ये lower abdominal cavity में localized होते हैं, and that too inside it. Now, the parts or the components of the female reproductive system basically starts with the process of with a very important structure, with a very important part that is called ovaries. Ovaries हो जाएंगे, all right. So this basically consists of a pair of ovary. So you can see ये वाला जो part हो जाएगा, this is ovary. Clear? So this is in pair, है ना? तो pair में हो जाएगा. And a pair of oviduct which you can see. Then there is uterus, cervix, vagina, and external genitalia, which is localized in the pelvic region. So this is ovary. ये वाला जो part आपको दिखता है, this part basically includes the fallopian tube. ये वाला जो part है, this is the fallopian tube, which is also called as oviduct. This is the fundic region. ये portion fundic region हो जाएगा. Pulsed area होता है basically. Then this central part becomes the uterus wala part. This is uterus. This is cervix. This becomes vagina. Then this becomes the opening, which is vaginal opening, which is basically called as the vulva. All right.
तो ये हो जाएगा। तो ये बेसिकली मेन कंपोनेंट्स होते हैं। मैमरी ग्लैंड्स के बारे में भी हम देखेंगे बाद में। Now all these parts of the system along with a pair of mammary glands, they are integrated structurally and functionally to support the process of ovulation, fertilization, pregnancy, birth and childbearing. मतलब ये जो पूरा सिस्टम है जो हम देखते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, ये कोई एक काम नहीं करता, ये मल्टीपल टास्क परफॉर्म करते हैं। मल्टीपल टास्क मीन्स व्हाट? मल्टीपल टास्क मीन्स टू सपोर्ट द प्रोसेस ऑफ ओव्यूलेशन, टू सपोर्ट द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन, इम्प्लांटेशन, प्रेगनेंसी and birth and then child care as well. तो सारा काम होता है। Now ovaries की जब हम बात करते हैं, so if I just isolate, इसमें से अगर मैं सिर्फ ओवरी को आइसोलेट करूं, okay, so ovaries जो होते हैं, these are considered to be as the primary female sex organ, and that it ultimately produces the female gamete, which is called as the ova. So this is the ovary which you can see over here. Just a minute. We can in fact like this. So it will be better to show you in a complete model because otherwise it will be little cliche. Now, so basically ovary की हम बात कर रहे थे, तो ovary की जब हम बात करते हैं ना, तो ovary basically female gamete का production करता है, that is called ovum. All right, that means this structure it produces basically ovum. Clear? Now, this apart from producing ovum, they are also responsible for producing several steroid hormones like ovarian hormones. And these ovaries, they are localized on each side of the lower abdomen. तो आपको दिख रहा था, मैंने भी जब आप स्किन के साथ इसको ड्रॉ करवाया था, so you might have seen it also कि that was localized in the lower pelvic area or lower abdominal area. Now, each ovary is basically around 2 to 4 centimeter in length and is connected to the pelvic wall and uterus by ligaments. So ये जो structure आपको दिख रहा है, this is basically called ligaments, जो कि ovary को uterine wall से connect करके रखता है. Now each ovary is covered by a thin epithelium which encloses the ovarian stroma, and the stroma is ultimately divided into two zones. मतलब ovary के अंदर का जो आप region देखेंगे ना, जैसे अगर मैं इसकी बात करूं, like this. Alright, so ये वाला पार्ट अगर मैं बात करूं, इसकी अगर मैं बात करूं, so इसके दो पार्ट्स होते हैं, जैसे इसमें बोल रहा है ना, एक ओवेरियन स्ट्रोमा वाला पार्ट हो जाएगा और एक कॉर्टेक्स वाला पार्ट होता है और एक इनर मेडुला वाला पार्ट हो जाएगा. So this portion which you can see, ये वाला जो पूरा पोर्शन होता है ना, ये वाला पोर्शन इज कॉर्टेक्स वाला पार्ट, पार्ट, और ये वाला जो पोर्शन दिखता है जिसमें ब्लड वेसल्स होते हैं, दैट बिकम्स द मेडुला वाला पार्ट. सो मेडुला वाला पार्ट जो होता है वो ओवरी में ब्लड वेसल्स से रिच होता है, एंड कॉर्टेक्स वाला वो पार्ट होता है जहाँ पे पूरा प्रोसेस होगा ओव्यूलेशन का, ओवेरियन फॉलिकल्स डेवलप होंगे, सारी चीजें होंगी. ठीक है, तो ये हम देखेंगे डिटेल्स में जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे. या तो ये हो जाएगा. Like this. Okay. Now, so this is the diagrammatic section. यहाँ पे आपको दिख रहा है that ये एक longitudinal section बनाया है, sectional view of the pelvic showing the reproductive system, just like this only, but ये side से, side wise से है, तो ऐसा होता है. Now, oviducts की जब हम बात करते हैं, which is the fallopian tube, तो इसमें ultimately uterus and vagina, oviduct, uterus and vagina जो होते हैं, all these three components, they are going to include the accessory ducts. ये female accessory ducts में आते हैं. Why female accessory ducts? क्योंकि ये passage का काम करेंगे
for transporting ovum that is released from the ovary towards the uterus. That's one. तो ये तीनों के तीनों आ जाएंगे फीमेल एक्सेसरी डक्ट्स में. Each fallopian tube is about 10 to 12 centimeter long and extending from the periphery to each ovary to the uterus. Now the part which is closer to the ovary, that is funnel shaped and that is infundibulum. Now इसमें मैं आपको एक बात बता दूं कि generally जो ओवरी होता है ना, fallopian tube जो होता है उसके 3 पार्ट्स होते हैं. यहाँ पे अगर मैं लेबल करूं, so this part, first part, this is the second part, and this becomes the third part. Okay. So this is the infundibulum. This is the ampulla, and this is the isthmus. तो ये 3 पार्ट्स होते हैं जो कि fallopian tube के होते हैं. ना infundibulum वो पार्ट होता है जो कि ओवरी के सबसे क्लोज है. Clear? And you can see the finger-like projections that is found in case of the ovary. So that is called fimbriae. That is called fimbriae. So you can see finger-like projections over here. So that is called as the fimbriae. इसका मेन काम ये होता है that after the ovulation process जो ovary ovum को release करेगा ना, ये उसको collect करेगा. So you can see the edges of the infundibulum possesses finger-like projections, which is called fimbriae, which helps in collection of the ovum after the ovulation. ये function बहुत important है, ये पूछता है. ठीक है. Now infundibulum leads to a wider cavity. ये थोड़ा सा wider cavity आ जाएगा जिसको हम ampulla बोलते हैं, which you can see यहाँ पे आपको दिख रहा है. ये ampulla वाला part हो जाएगा, जिसका मेन काम होता है कि ये मेन साइट होता है fertilization का. Sorry. So this is considered to be as the main site of fertilization. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. यहाँ पे so part of the oviduct which is called as the ampulla, and the last part of the ampulla का मैंने आपको already बता दिया that ampulla is considered to be as the main site of fertilization. Basically junction जो होता है isthmus और ampulla का वो main site माना जाता है, but most probably it is the ampulla where the fertilization takes place. ठीक है. फिर उसके बाद isthmus आता है. तो isthmus is primarily responsible for it's a narrow junction that will provide a pathway for the movement of the ova towards the uterus. ठीक है. तो fertilization के बाद ovum जब fertilize हो चुका है तो zygote बनाएगा and zygote बनने के बाद ultimately उसके जितने developmental process होंगे ना, isthmus उसका passage lead करता है. So isthmus has a narrow lumen and it joins to the uterus. Now the uterus is this part. हम यहाँ पे देखेंगे. Just a ये वाला जो पार्ट है ये हमारा यूट्रस का पार्ट है, जो कि जनरली पेयर शेप होता है. यू कैन सी इसका शेप आप देखोगे, दिस इज जनरली पेयर शेप. ऑलराइट, व्हिच इज आल्सो कॉल्ड बम. Shape of uterus is like inverted pear, supported by ligaments attached to the pelvic wall. The uterus opens into vagina through a narrow cervix. ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था. इसकी ओपनिंग जो होगी वो नीचे की तरफ होती है, तो cervix leading into vagina हो जाएगा. Now the cavity of the cervix is basically called as cervical canal. तो ये जो पूरा पैसेज आपको दिखता है ना, ये पूरा का पूरा पैसेज ही cervical canal इसको बोला जाता है. That is called as cervical canal. Which along with vagina forms the birth canal. मतलब cervical canal और vagina जब ये दोनों मिल जाएंगे, that means this part and cervical canal, ये दोनों मिल करके क्या बनाते हैं, birth canal बनाते हैं, which is this birth canal बनाएंगे. Now let me tell you about the wall of the uterus. तो wall of the uterus की जब हम बात करते हैं तो उसमें generally 3 parts हो जाएगा. Outer or external thin membranous layer, which is called perimetrium, which is this one. Let me first show you in this figure and model. Wait.
this layer. This is perimetrium. This one, sorry, just a moment. This is not perimetrium. This is the innermost layer. मैं outer बनाना. This one. This one is perimetrium, which is the external layer. This one is myometrium. And this inner one becomes the endometrium. So perimetrium, myometrium and endometrium, ये 3 layers होते हैं जो कि uterine wall को बनाते हैं. All right, जिसमें इसका रोल और इसका रोल, that means myometrium और endometrium का रोल बहुत important होता है. Perimetrium is just a covering. All right, now if I can just use like ये वाला जो part अगर मैं use करूँ, so this perimetrium which you can see has been highlighted with a different tool. You can use like a lot other color as well. This one. And then for endometrium we can use a color which is purple. So इस तरीके से आप देख सकते हैं that how the bifurcations have been done. Perimetrium का layer आपको अलग से दिख रहा है, myometrium अलग से दिख रहा है, endometrium अलग से दिख रहा है. Again I can, ये आपका 3 layers होते हैं. Now what is the role? तो ये perimetrium मैंने आपको already बता दिया कि that this is external thin membranous layer, and middle thick layer जो होता है, this myometrium is basically responsible for exhibiting strong contractions during the delivery of the baby. तो इसका main काम ये होता है कि whatever during the parturition process जो uterus में जो दर्द उठता है, जो muscular contraction होता है, that is because of myometrium itself, because it is made of smoother muscles. All right, that is the case. Now myometrium क्योंकि आप ये आपका smooth muscles के बने होते हैं. Now inner glandular layer जो होती है, that is basically called as the endometrium. And endometrium, it lines the uterine cavity क्योंकि अंदर की layer है, so this is going to line the uterine cavity. Now endometrium basically undergoes cyclical changes during the menstrual cycle, while myometrium exhibits strong contractions during the delivery of the baby. तो ये मैंने आपको already बताया हुआ था कि endometrium में menstrual cycle में changes होते हैं जो कि हम अभी study भी करेंगे. And apart from that, myometrium की जब हम बात करते हैं, so this basically involves in the stronger contractions during the delivery of the baby. ठीक है, तो ये वाला part. Now let us just have a look into the external genitalia of the female. So external female genitalia की कुछ sequence है. You just have to note down the sequence because इसका sequence कभी-कभी पूछता है examination में. So you need to note that part. Now external female genitalia basically includes mons pubis, labia majora, labia minora. There is hymen and clitoris. ठीक है, 5 important structures होते हैं. Mons pubis cushion of fatty tissue होता है, that is actually covered by skin and pubic hair, while labia leading to mons pubis is the labia majora, which are fleshy folds under the mons pubis, extending down the mons pubis and surrounding the vaginal opening. Then comes the labia minora, which are paired fold of tissues under the labia majora, and then the opening of the vagina is covered by a partial membrane which is called hymen. So hymen एक का membrane होता है that covers up the opening of the vagina basically. All right, and then the last portion and the last component is the clitoris part, which is a tiny finger-like structure lying at the upper junction of the 2 labia minora above the urethral opening as well. So that is the case. You know, there's a statement also that hymen often gets torn up during the first intercourse or the first sexual contact. However, this might also take place, this breakage of hymen might also occur because of active participation in any of the, because of active participation in any of the physical activities. Agar koi bhi female kisi physical activity mein involved hai, so for that part might be possible or might be the case ki ye breakage ho jaye. Okay? So this is about the, female reproductive system. Now the next component which is included in this part is your mammary glands. Female mammary glands की जब हम बात करते हैं तो वो हमारा एक part हो जाएगा that we are going to see it. All right. Now
फीमेल मैमरी ग्लैंड्स की जब हम बात करते हैं, सो दिस बेसिकली स्टार्ट्स, मैमरी ग्लैंड्स में बेसिकली दो इंपॉर्टेंट पार्ट्स हो जाते हैं जो हमें देखना है, ठीक है। एक जो इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाएगा वो हो जाएगा मैमरी ग्लैंड्स के दो इंपॉर्टेंट पार्ट। एक तो ग्लैंड्यूलर टिश्यू होता है, क्लियर, उसमें वेरिएबल अमाउंट ऑफ फैट्स होंगे, variable amount of fats. So glandular tissue along with the variable amount of fats, ये दो चीजें होती है। ये जो ग्लैंडुलर टिश्यू होता है ना, यही सबसे मेन इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है, क्योंकि ग्लैंडुलर टिश्यू सिक्रीशंस कराते हैं। नाउ हाउ द प्रोसेस गोज ऑन इज दैट यू कैन सी कि यहाँ पे फैट का कंपोनेंट है जो कि मैंने यहाँ पे ऑलरेडी आपका मेंशन किया, वैसे उसका कोई रोल नहीं होता, दैट इज जस्ट रिक्वायर्ड टू गिव अ शेप द मैमरी ग्लैंड्स, ठीक है। Now, glandular tissue basically comprises of mammary lobes. ये basically आपका mammary lobes से start होता है, which you can see over here, जो कि यहाँ पे portion होता है। Mammary lobes combine करके mammary alveolus बनाएंगे, and mammary alveolus जो होता है, this is the main site of milk formation. ये वही site होता है जो कि milk को बनाए. So that's why this is considered to be as main site of milk formation, which is mammary alveolus. ठीक है. Apart from that, ये जब अब मैमरी एल्वियोलस में अगर मिल्क बन गया है तो डेफिनेटली देयर हैज टू बी स्टोरेज एज वेल, मैमरी ग्लैंड्स में या मैमरी डक्ट में जाके वो स्टोर भी होगा। तो जो स्टोरेज होता है वो बेसिकली आपका मैमरी डक्ट्स एंड मैमरी एम्पुला में होता है, दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर मैमरी ग्लैंड्स। अपार्ट फ्रॉम दैट फिर ये सारा का सारा कॉन्स्ट्रक्शन होता है, यू कैन सी ये सारे इंटरकनेक्शंस बने हुए हैं यहाँ पे, सो ऑल दीज आर जॉइनिंग टू वन अनदर। तो ये आपका मैमरी डक्ट बनाते हैं, मैमरी डक्ट से मैमरी एम्पुला बनता है, एंड मैमरी एम्पुला अल्टीमेटली लैक्टिफेरस डक्ट बनाता है। लैक्टिफेरस डक्ट वो डक्ट होता है थ्रू व्हिच मिल्क इज अल्टीमेटली सक्ड आउट बाय द बेबी, ऑलराइट। द लास्ट कंपोनेंट बिकम्स द निपल पार्ट। तो ये हो जाएंगे, एंड ये कुछ मस्कुलर रिब्स होते हैं जो कि उसको सपोर्ट करते हैं, ठीक है। हम एक बार इसका पूरा स्टेटमेंट देख लेते हैं, इससे एक आइडिया आपको क्लियर मिल जाएगा। यू कैन सी ऑल्सो पूरा एक इंटरकनेक्शन होता है, alright, so it has been written over here कि functional जो mammary gland होता है, it is a characteristic feature of all the female mammals. Now mammary glands are paired structure which are called as breast, that contains glandular tissue जो मैंने अभी आपको बताया, and also containing variable amounts of fats in them. Now the glandular tissue of each breast is basically divided into 15 to 20 mammary lobes. Glandular tissue में lobes हो जाएंगे, जो मैंने आपको बताया ना कि interconnections होते हैं। मैमरी लोब्स जो होंगे उसमें क्लस्टर ऑफ सेल्स होगा जिसको मैमरी एल्वियोलाई बोलेंगे, वेयर विल द मिल्क विल बी सिक्रीटेड और मिल्क विल बी अल्टीमेटली फॉर्म, ऑलराइट। एंड दिस विल बी, अब कहीं बना है तो वो स्टोर भी होगा, तो वो डक्ट एंड एम्पुला में जाके स्टोर हो जाता है इन द ल्यूमेन ऑफ द एल्वियोलाई, व्हिच विल अल्टीमेटली ओपन इनटू ट्यूब्यूल्स, एंड ट्यूब्यूल्स आर अल्टीमेटली ओपन इनटू मैमरी डक्ट में, जो कि ये अल्टीमेटली ओपन होंगे। सो सेवरल मैमरी डक्ट्स विल जॉइन टुगेदर to form a wider mammary ampulla, which is connected to lactiferous duct through which milk is ultimately sucked. अब क्वेश्चन कैसे पूछता है इसमें, क्वेश्चन हमेशा सीक्वेंस में पूछेगा। आपको ये पूछ सकता है कि मिल्क का सिक्रीशन कौन से कंपोनेंट में हो रहा है, मिल्क का स्टोरेज कौन से कंपोनेंट में हो रहा है, ठीक है, इस तरीके से पूछ सकता है। सीक्वेंस हमेशा पूछता है, लाइक मैमरी लोब्स जो होंगे वो कंबाइन करके मैमरी डक्ट बनाते हैं, देन देयर इज एल्वियोलाई, एल्वियोलाई से अल्टीमेटली आपका tubules बनेगा, then duct बनेगा, then ampulla बनेगा, and then ultimately the lactiferous duct is formed through which the milk is sucked. तो आपको ये पूरा sequence ध्यान में रखना है, because sequence is very very important in this case. All right, now we will be next just a moment talking about now the next important thing to note is in this entire process, तो ये हमारा पूरा मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम हो गया जो हम लोगों ने देखा। Now we are going to talk about the process of gametogenesis. We will be dealing with that one. All right, now just a moment. Now here, now in the process of gametogenesis, when we talk and see,
सो गैमेटोजेनेसिस में बेसिकली जो मेन रोल होता है वो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स का रोल हो जाएगा. सो एज द वर्ड इज सजेस्टिंग गैमेटोजेनेसिस, तो अभी आप लोगों को ऑलरेडी मालूम है दैट दिस इज कॉल्ड एज द गैमेट्स फॉर्मेशन. तो इसमें सेक्स ऑर्गन्स का इन्वॉल्वमेंट होगा. So the primary sex organs, that means the testes in the males and ovaries in the females, that is going to produce the gametes, which are sperms and ovum respectively, by the process of gametogenesis. Now testis में जो structure sperm बनाएगा उसको हम immature male germ cell बोलेंगे, जो कि spermatogonia हो जाएगा through the process of spermatogenesis that begins at puberty. Now ये जो spermatogonia होगा that is present on the inner side of the seminiferous tubule. इसका मैं आपको पूरा process भी बताऊंगी. All right. So that spermatogonia मतलब हमें ये पता चला कि spermatogenesis जो process होता है उसके केस में basically spermatogenesis में जो spermatogonia होगा this spermatogonia will be ultimately forming sperms. This will be ultimately forming sperms. So that this means if this spermatogonia is diploid, तो इसमें जब reduction division होगा तब ये haploid gametes बनाएगा, which are actually considered to be as the sperms. लेकिन जब हम oogenesis की बात करते हैं तो oogenesis के केस में जो condition आएगा वो हो जाएगा ओगोनियल मदर सेल का, जिसको हम oogonia भी कंसिडर करेंगे या oogonia बोलेंगे. So oogonia भी spermatogonia की तरह ही diploid होता है. So this is also diploid in nature. ठीक है. So this is also diploid in nature. तो ये जो oogonia होगा इसमें भी क्योंकि reduction और ovum और कोई भी gamete होती है तो वो haploid होती है. तो ये जो oogonia which is the reduction or meiosis that is going to produce the ovum or the egg part. तो वही चीज यहाँ डेफिनेशन में मेंशन्ड हुआ है which you can see. और ये जो आपको स्ट्रक्चर्स मिलते हैं, ये जो स्ट्रक्चर्स हमें मिले थे वो कहाँ मिले थे? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के सेक्शन में मिला था. ये हमें जो स्ट्रक्चर मिला वो मिला सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में. तो ये जो पूरा प्रोसेस होता है स्पर्म के फॉर्मेशन का ना, ये पूरा का पूरा सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में ही आकर करता है जो हम देखेंगे. ऑलराइट. सो इसमें मल्टीप्लाई, तो इसमें वही मेंशन्ड है दैट इट इज प्रेजेंट ऑन द इनसाइड वॉल ऑफ द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स. And this is going to multiply by the process of mitotic division, which is going to increase its number. All right. So we will be seeing this portion and seeing this part, spermatogenesis और oogenesis का पूरा जो process है ना, ये भी हम देखेंगे. That we will see how exactly the sperms will be formed. जैसे मैंने आपको बताया ना कि यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो here is the process of the spermatogenesis that has been given. तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे, once you are going to see this part, तो यहाँ पे आपका स्पर्मेटोगोनिया है. सो स्पर्मेटोजेनेसिस का प्रोसेस मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया दैट दिस इज गोइंग टू बिगिन एट प्यूबर्टी. सो यू कैन सी कि स्पर्मेटोगोनिया माइटोसिस डिफरेंशिएशन करा के अपना नंबर बढ़ाता है, व्हिच इज कॉल्ड एज द प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स. नाउ दीस प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स विल बी अंडरगोइंग द फर्स्ट मेयोटिक डिवीजन. यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इनका नंबर ऑफ सेल्स जो है वो इंक्रीज हुआ है. नाउ once the number of cells has been increased, तो ये ultimately secondary spermatocytes बनाते हैं. तो यहाँ पे आपका 46 number of chromosomes था. alright, क्योंकि ये diploid है already, ये मैंने आपको already बताया हुआ था. तो ये अगर diploid है तो this will also be diploid क्योंकि mitosis differentiation हुआ है. So this will also be having how many chromosomes? 46 chromosomes. ऐसा हो जाता है. फिर इसमें first meiotic division होगा तो secondary spermatocyte बनाएगा. That's why it is of 23 chromosomes. And secondary spermatocytes में फिर second meiotic division होता है तो वो spermatids बनाते हैं. Spermatids will also be having 23 number of chromosomes like this. Clear? And spermatids का जब differentiation होता है, they are going to differentiate themselves into mature cells, which are ultimately called as spermatozoa or sperm. ठीक है? तो this is the case. Now अब इसमें जो हमें ध्यान देने वाली बात है वो ये, जो नोट करने वाली बात है वो ये कि हमें ये ध्यान में रखना है दैट हाउ मेनी नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स आर प्रेजेंट इन ईच सेल. ठीक है. जैसे इसमें क्वेश्चंस किस तरीके से पूछा जा सकता है? क्वेश्चंस यूजुअली कैन बी आस्क्ड वाया कि हाउ मेनी नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स आर देयर इन ईच सेल. तो स्पर्मेटोगोनिया में प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स में 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हो जाएगा. इसमें भी 46 नंबर होता है क्रोमोसोम्स. क्लियर? On the other hand,
when we talk about secondary spermatocytes, spermatids and spermatozoa, तो इनमें 23 number of chromosomes individually present होते हैं. तो आपको क्रोमोसोम नंबर ध्यान रखना है, आपको स्टेजेस ध्यान रखने हैं, और आपको ये ध्यान रखना है कि कौन से प्रीसीडिंग सेल्स हैं जो एक दूसरे को फॉलो अप करते हैं. ठीक है. सो दिस इज अबाउट द स्पर्मेटोगोनिया, जो स्पर्मेटोजेनेसिस, जो कि हम फ्लो चार्ट के थ्रू ऑलरेडी देख चुके हैं एंड अंडरस्टैंड कर चुके हैं. ऑलराइट. सो इसका कंटेंट भी यहाँ पे मेंशन्ड है, व्हिच यू कैन सी ओवर हियर. यहाँ पे सेक्शन दिया हुआ है, तो यहाँ से आपको डिफरेंट सेल्स भी दिखेगा. सो यू कैन सी दैट दिस इज द स्पर्मेटोगोनियम, जो सबसे पहले प्रेजेंट है, और सर्टोली सेल्स है जो कि नरिशमेंट उसको प्रोवाइड करेगा. ऑलराइट. ऑन द अदर हैंड, स्पर्मेटोगोनियम से प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट प्रोड्यूस हुआ, तो ये भी डिप्लॉयड हो जाएगा. फिर इससे हमारा क्या प्रोड्यूस हुआ, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, सो दिस विल बी हैप्लॉइड. फिर इससे हमारा स्पर्मेटिड प्रोड्यूस हुआ, दिस विल आल्सो बी हैप्लॉइड. एंड इससे फिर स्पर्मेटोजोआ और स्पर्म प्रोड्यूस होगा, व्हिच विल आल्सो बी हैप्लॉइड. तो मतलब 2 सेल्स की कैटेगरी डिप्लॉयड है और 3 सेल्स की कैटेगरी ऐसे हैं जो कि हैप्लॉइड है. सो दिस थिंग यू नीड टू know in this one, all right, because this is very important. Now the इसमें जो नेक्स्ट चीज है नोट करने वाली, वो बेसिकली ये हो जाएगा कि स्टेजेस. नाउ द प्रोसेस, इसमें जो हम लोगों ने देखा कि जो प्रोसेस है वो क्रोमोसोम नंबर एंड सारी चीजें आपको बहुत इजी से याद हो जाएगा. देयर इज नो नीड टू हैव अ वरी अबाउट इट, क्योंकि वो फ्लो चार्ट के फॉर्म में दिया हुआ है. नाउ 3 टर्मिनोलॉजीज आपको मिलते हैं. एक होता है स्पर्मेटोजेनेसिस, एक होता है स्पर्मियोजेनेसिस, और एक होता है स्पर्मिएशन. ऑलराइट. So you can see there is spermiogenesis that has been given over here, and then there is spermiation that has been given over here. So spermiogenesis जो होता है, this is basically a process जिसमें spermatids का transformation किस में होगा, sperms में हो जाएगा. So that is called spermiogenesis. Now जब sperms बनते हैं तो वो immature होंगे. So those immature sperm cells, they will be transforming into, or they will be converting into mature cells after getting nourishment. तो वो nourishment कौन देगा, सर्टोली सेल्स देगा. So their sperm heads gets embedded into सर्टोली cells after getting nourishment, और जैसे इनकी nourishment होगी, they will be finally released from the seminiferous tubules by the process of spermiation. So there is a difference between spermatogenesis, then spermiogenesis and spermiation, and you need to know about all these things. तो ये हो गया हमारा spermatogenesis का पार्ट. Now, अब इसमें जो एक चीज बच रही है वो ये वाली पार्ट बच रही है कि इसमें कौन कौन से हॉर्मोन्स का एक्शन किस तरीके का होगा. सो व्हेन वी टॉक अबाउट द हार्मोनल एक्शंस, तो हार्मोनल एक्शंस में जब हम देखेंगे, तो क्योंकि मैंने आपको ऑलरेडी बता दी कि ये प्यूबर्टी में शुरू होगा, तो प्यूबर्टी में देयर इज अ हार्मोन व्हिच इज कॉल्ड गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, व्हिच इज इंक्रीज टू अ वेरी हाई लेवल. तो जब ये GnRH इंक्रीज होता है ना, इसका लेवल जब इंक्रीज होगा, सो दिस इज गोइंग टू एक्ट ऑन द पिट्यूटरी ग्लैंड. तो जब ये पिट्यूटरी ग्लैंड पे एक्ट करेगा, तो पिट्यूटरी ग्लैंड से फिर 2 हार्मोन का रिलीज होता है. वन इज कॉल्ड LH, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, एंड द अदर इज कॉल्ड FSH, व्हिच इज फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन. तो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का काम होता है दैट दिस इज गोइंग टू एक्ट ऑन लेडिक सेल. ये एक्ट करेगा लेडिक सेल्स में, एंड इट विल मेक श्योर कि वो लेडिक सेल्स क्या रिलीज करे, मेल सेक्स हार्मोन को रिलीज करे, टेस्टोस्टेरोन. एंड फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो होता है, दिस मेक श्योर कि सारा जो डेवलपमेंट हो रहा है फॉलिकल्स का, मतलब जो ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स, ये जो फॉलिकल्स बन रहे हैं, ये सब एकदम बराबर बनने चाहिए. एंड दैट टू इट एंश्योर्स द प्रोसेस ऑफ स्पर्मियोजेनेसिस एंड स्पर्मिएशन. तो ये बेसिकली इनको कंट्रोल करता है, स्पर्मियोजेनेसिस को भी कंट्रोल करता है, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट इट आल्सो रेगुलेट्स द प्रोसेस ऑफ स्पर्मिएशन एज वेल. इसका भी काम करता है. ठीक है. So this is the case. So you can see the increased levels of GnRH acts on the anterior pituitary gland and stimulates the secretion of 2 gonadotropins, LH and FSH. LH Leydig cells पर act करेगा and stimulate the synthesis and secretion of androgens, while FSH जो होता है, this is basically responsible for this androgens in turn is basically responsible for stimulating the process of spermatogenesis. And FSH, it acts on the Sertoli cells, stimulating the process of spermiogenesis and spermiation. ये दोनों का काम करेगा. इनका इंश्योरिटी ये रहता है कि जो भी प्रोसेस हो रहा है, that too it is in perfect form. Secretions of some factor which helps in the process of spermiogenesis, which you can see. Yes. So that is the case.
Clear? Yeah, very good. Okay, so this is about the spermatogenesis part that we have seen. तो gametogenesis का spermatogenesis वाला जो portion है वो हम लोगों ने complete कर लिया. Now oogenesis वाला जो part है we will be taking up in the next lecture along with the sperm structure as well. तो next lecture में हम आगे बढ़ेंगे जिसमें हम sperm के structure के बारे में deal करेंगे along with oogenesis and menstrual cycle, and if possible we will also be discussing about the process of fertilization and implantation as well. All right, till then keep revising and keep learning. Thank you very much.